रहना सर वहाँ से और यहाँ से रुकिए। Hello students, welcome to Samyak. Hello students, welcome to Samyak. In the last class, we have discussed about a type of introduction. Introduction was that we just started. सबसे पहले तो आयुष यादव भाई क्लास स्टार्ट हो गई है. That's why I have patience. Now, in the last class, we have discussed about a type of flow chart in which we should study what we should study is or what in what way we are going to study. What's the issue? नहीं अभी चलने दो 6,000. Okay. Now next is we are going to start with 1707. 1707. The year when Aurangzeb died. Aurangzeb died during this year. When Aurangzeb died during this year, what happened was 1707 Aurangzeb died. Aurangzeb died. After the death of Aurangzeb, later the successors of Aurangzeb were known as later Mughals. Successors of Aurangzeb were known as later Mughals. And they ruled India symbolically. They were, you can't say they ruled India, but they were present on the throne for as long as about 150 years after the death of Aurangzeb. 150 long years. If such a long period was there, and they remained on the throne and they were used by the they were used by the other powers who were trying, who used to trying or who were trying or who were planning to rule India as a puppet rulers. In the mains class, we used to discuss about, in the mains class or mainly the optional, we used to discuss about the reasons of failure of Mughal Empire. Reasons of the failure of Mughal Empire. But this is a main topic. Here we would discuss about the facts and the incidents, mainly the incidents which were proved turning point for Mughal Empire. I am not going to tell you about all nitty-gritty details about this topic. I'm not going to discuss about all the details, what are the nitty-gritty or those small facts. I'm not going to discuss all these.
I am just going to give you the basic facts or basic incidents which turned or which proved disastrous to Mughal Empire. Now, the next is, here you would see 3 March 1707. 3 March 1707, Aurangzeb died in Ahmednagar and buried in Aurangabad. Buried in Aurangabad. When Aurangzeb died, you would find it in old NCERT chapter 1, page number approximate 2 or 3. Page number 2 and 3. At the time of death of Aurangzeb, at the time of death of Aurangzeb, first reputation of Mughal Empire was very high. It means the reputation was so much high, reputation of Mughal Empire was so much high that everything, every power in India had to bow in front of Mughals, or they were dwarfs. They were very tiny in front of the name of Mughals. Second thing, army was very powerful. Army was very powerful. Third, administration of Mughal Empire, administration of Mughals was very effective. Very effective administration was there at the time of death of Aurangzeb. Economic crisis was there. Economic crisis was there. Crisis was there, but had not reached at the verge of collapse. Yes, economic system was there, economic crisis was there, but it was not going to collapse. It means revival of economic system, economic system under competent ruler was possible. Competent ruler was possible. It means economic revival was possible. It means when Aurangzeb died, no doubt situations were critical, situations were quite hard, situations were critical, situations were quite hard, but situations were critical, situations were quite hard, but you can see that everything was normal at that time. Everything was normal, or everything was under the control. It could be controlled if there is if and but competent ruler would have been there. If some competent ruler would have been there. Listen, actually in the next 2 or 3 classes we would discuss about the reasons of
rise of Britishers and what were and the reasons for the rise of decline of Mughals. Therefore, please try to focus on these facts. Understand, these are not relevant, these are not so much relevant, but I can assure you that these facts are quite important. These facts are quite important for your basics, because without these you can't reach on your next stage of 19th beginning of 19th century, because beginning of 19th century could only be understood only and only if you are able to understand the facts related to the previous century, that is 18th century I have started. Please note it down whatever I am teaching you. I am not going to discuss each and every nitty-gritty detail here. Understand? In-depth details would not be there, but yes, I would discuss the superficial details which can clear your concept, which can prepare you for the next stage, that is next stage of empires or next stage of system. Now the next is later Mughals. Aurangzeb died. After the death of Aurangzeb, 3 sons were there. They started fighting war of succession. War of succession. Who would be the next king? That was the rule was not fixed at that time. Who would be the next king? The rule of it was not fixed or not confirmed at that time, or mainly in the Mughal Empire. It was not sure that only and only the highest ruler, eldest son is going to become the ruler. Yes, it was not sure that only and only the highest ruler would become the eldest son would become the ruler. It was not sure. Therefore, war of succession began. War of succession began. When war of succession began, Bahadur Shah first emerged victorious. Bahadur Shah first emerged victorious. I'm not going to discuss all the small or nitty-gritty details about it. He ruled India for about 5 years. When he got the throne, his age was about 60 years. When he got the throne, his age was about 60 years. 60 years. When his age was 60 years and he was not of the opinion to survive, to follow the policy of his father. Follow the policies of his father. Yes, he was not keen to follow the policies of his father. What was the policies of Aurangzeb? Policies of Aurangzeb towards rebels. Policies of Aurangzeb towards rebels. Deal with them with iron fist. Iron fist. Iron fist means if somebody would raise the voice
against the throne, if somebody would raise the voice against the throne, it would definitely be suppressed with the iron fist, means with the force. Iron fist means forcefully. Forcefully. Therefore, he adopted the policy of blood and iron. Blood and iron. It means, blood and iron means, the policy of blood and iron means if you would raise voice, you would be suppressed barbarically. No appeasement or no forgiveness would be awarded to you until unless you are not going to bow in front of the king. This was the policy of Aurangzeb towards rebels. Policy of Aurangzeb towards rebels. Now next is, what was the policy of, who were the challengers, who were the powers who were posing challenge or who were challenging the authority of Aurangzeb? We will discuss. The powers were Sikh, Afghan, Rajput, Jats, Marathas, Bundelas. These were the powers who were raising voice against the authority of Aurangzeb. Against the authority of Aurangzeb. Aurangzeb fought with Sikh, he suppressed Afghans, he killed Rajputs, he suppressed Jats, he pressurized or killed Bundelas and fought with Marathas for about 30 years. Aurangzeb. Such a powerful, such a dedicated personality he was. He was powerful, he was barbaric in nature. He was arrogant. He was decided that no, I am not going to have a deal with the rebels. If you want to remain here, you have to bow in front of the king or Mughal emperor. But what was the policy adopted by Bahadur Shah? First, Bahadur Shah first, he never accepted the policy of Britishers, policy of his father, and he opted for the policy of appeasement towards rebels. This is a very disastrous or dangerous policy to any of his supporter, to any of a king. This is a disastrous policy. This is a policy which should not be followed by any ruler. What is policy of appeasement? Many a times you would see that policy of appeasement, this word appeasement or policy of appeasement is adopted by or is used by the political parties against other political party, mainly against the government. What is policy of appeasement? A policy of appeasement means accepting the wrong demands and ignoring the wrong deeds of someone. Accepting wrong demands, accepting wrong demands and ignoring wrong deeds
of someone, some community, some ruler, some power, and something. Wrong deeds. Understand? This is the power of, this is the policy of appeasement. Understand? It means when Bahadur Shah first adopted this policy of appeasement, what he did, he just made friendship with Sikh Guru, Guru Gobind Singh, offered him a mansab of 5,000 jat and 5,000 sawar. It means Guru Gobind Singh also accepted the authority or sovereignty of son of Aurangzeb or sovereignty of Mughals, but in return Mughals also accepted his dominance on the Sikh land. Similarly, he recognized the Bharatpur state. He awarded Rajputs with high ranks, as well as he also awarded Rajputs with titles, with high titles. Understand? He also made peace with Bundelas, and the most important thing he adopted was that under his policy of appeasement, he released Sahu. He tried to establish friendly relations with Marathas. Friendly relations with Marathas. Aurangzeb fought with Marathas for about 30 years, and he, means Bahadur Shah first, was trying to establish friendly relations with Maratha. No doubt friendly relations, but to appease Maratha. One of the most important thing of him was that his policy towards Marathas. What he did, when he opted for when he started dealing with Marathas, first thing, he released Sahu. He released Sahu. Who was Sahu? Grandson of Shivaji. Grandson of Shivaji. And second thing, he allowed Marathas to collect Sardesh Mukhi from Deccan region. Sardesh Mukhi from Deccan region. This was his problem, or this was his mistake, that you are allowing a rebellious force, to raise your voice, to raise powers or raise the banner of rebel against, means you are allowing the rebellious force to collect taxes from someone. It means what? You are allowing them to collect taxes. What does that mean? That means the taxes Marathas are going to collect would definitely be used by them against Mughal establishment. Yes, this is the important thing. That is why when he released Sahu and allowed them to collect taxes from Deccan region, it means you are providing finances to Marathas. That finances would definitely be used by Marathas to raise their empire, to struggle for their empire, to raise their army,
and to create a threat against Mughal rule. This was a short-sighted decision of Bahadur Shah first. This also proved disastrous for Mughal Empire. Whatever Aurangzeb did, the first thing he did was that he just first thing he did was yes ठीक तो है यार the first thing he did was that he never let Marathas to raise their voice against Mughals. He just contained Marathas in their Maratha land, and he never let Marathas to claim or expand their influence outside their territories. We will discuss these things once again, but here I would definitely discuss with you that here he allowed Marathas to collect taxes from Deccan region. Now, what the main thing next thing was, he died fighting against Sikh rebels. He died fighting against Sikh rebels. Yes. When he died while fighting against Sikh rebels, this was the weakness of Mughal army mainly. That this was the only Mughal ruler. He was the only Mughal ruler who died in the battlefield. And this was the mistake of his army. It means the signs of weaknesses in the Mughal army started seen or now visible that yes, Mughal army is getting weak and the Mughal emperor has died in the battlefield. But when he died, what was the outcome? I would make you write. I would dictate all the notes, whatever the notes you want. I would dictate all the notes. These are not significant relevant topics. These are somewhat topics which are important for. These are the topics which are. AC कहाँ है भाई? Remote कहाँ है इसका? हाँ बेटा. अच्छा आपने जाना है, जाओ, कोई समस्या नहीं, पानी की बोतल ला दो मुझे, ठीक है, और चाय की बोल देना ऊपर. Now when Marathas got powerful, or when Marathas became powerful, they started challenging the authority of Mughal. But when Bahadur Shah first died, war of succession started once again. War of succession started once again. Yes, war of succession started. It means once again the princes started fighting to capture the throne or whatever. But this war was quite different from the previous succession war. Why? Because in this war, for the first time, the Mughal princes were weak and the Mughal officers were strong. Initially, before that time also, during the regime of Akbar, after the death of Akbar, Jahangir and his son fought with each other. But they fought with each other for the throne, but their officers were behind. Officers were supporting, officers were taking
the side of one or the other one. Yes. When Jahangir died, Shah Jahan versus his brothers, they fought with each other, and officers provided their support to their favorite princes. When Shah Jahan did not die but he was captured, Aurangzeb fought with his brothers, and Aurangzeb proved himself most powerful. When Aurangzeb died, Bahadur Shah first proved himself the best among his brothers. Till these war of successions, the Maratha rulers, till these war of successions, princes used to fight war of succession, and the officers used to take sides of one prince or the other. This was the main thing. But what happened? In after the death of Bahadur Shah first? After the death of Bahadur Shah first, Mughal princes were weak. Therefore, since Mughal princes were weak, therefore what happened? Officers started fighting with each other, to establish their favorite prince on the throne. I am not going to discuss about the fact that how the war was fought and what happened and in what way they decided the things, because these are irrelevant topics. Now, after the Mughal princes were weak, Jahandar Shah got the throne. With the help of his minister Zulfikar Khan. He was quite powerful. He was an ambitious man, but Zulfikar Khan was an ambitious man, no doubt. But the main thing was that along with his ambitiousness, he wanted to fight with the evils present in Mughal Empire. Therefore, he tried his best to improve the things. If he tried his best to improve the things, then what happened? The thing which proved disastrous to Zulfikar Khan was that when Zulfikar Khan got successful in establishing his emperor or his favorite prince over the throne, other Mughal officers also got an idea to put their favorite prince on the throne. Other Mughal officers also got the same idea that if Zulfikar Khan can do this, why can't we? If such a situation was there, then what happened?
conspiracy against Zulfikar Khan started. Conspiracy against Zulfikar Khan started, and he was an totally incompetent ruler, competent and pleasure-loving ruler. He was totally an incompetent as well as pleasure-loving. Ayyash आदमी, Ayyash. He was under the influence of a mistress. मिस्ट्रेस नाचने वाली कह सकते हैं आप, या शायद जो भी है, I forgot its name, her name, yaar. Jahadar Shah was under the influence of some mistress. I would remember his name and I will tell him. नाम स्किप कर रहा है, आ जाएगा. It means she was so much influence, she had so much influence over Jahadar Shah. She had so much influence over Jahadar Shah that she was deciding each and every appointment. Lal Kunwar, no, not Lal Kunwar. Yes, she was Lal Kunwar. Lal Kunwar was there. She was so much, and she had so much influence over Jahadar Shah that she, a dancer, started interfering in each and every matter of imperial affairs. If she was able to influence, then what about Zulfikar Khan? Zulfikar Khan, started feeling suffocation, but he was not able to counter the activities, or to understand, or to fix the activities of Jahadar Shah, because ultimately he was the Mughal ruler. Therefore, you would see that fall of Zulfikar Khan took place. Later, the fall of Jahadar Shah took place, and the rise of two Mughal officers. Rise of two Mughal officers. They were two brothers known as Sayyid brothers took place. Known as Sayyid brothers took place. Sayyid brothers means Hussain Ali and Hassan Ali. And the name of Hussain Ali was also Abdullah Khan. Not Hussain Ali, Hassan Ali. The name of Hassan Ali was Abdullah Khan, and Hussain Ali was the another brother. Rise of these two brothers took place. They were Mughal officers. They got understood that yes, if Zulfikar Khan can put a puppet Mughal emperor over the throne, then why can't they? Therefore, they conspired. They killed Zulfikar Khan, and later they killed Jahadar Shah. Later, they dethroned Jahadar Shah. But later, they dethroned Jahadar Shah and established Farrukh Seer on the throne. अब उन्होंने फर्रुख सियर को गद्दी पर बिठाया. जब उन्होंने फर्रुख सियर को गद्दी पर बिठाया, तो फर्रुख सियर जो था एक बहुत डरपोक कायर बंदा था. उसे लड़ाई से घिन आती थी, उसे लड़ाई झगड़े से डर लगता था. He was not able to go to any battlefield. वो किसी युद्ध के मैदान में जाने में सक्षम नहीं था. डरपोक आदमी था, टोटली अ कवर्ड पर्सन. अब मुझे एक बात बताइए,
एक व्यक्ति जो पूरे तरीके से डरपोक है, उसे तुमने बादशाह बना दिया, उसे तुमने बादशाह बना दिया। बट हियर द कोल्ड पॉलिटिक्स वॉज ऑल्सो एट इट्स पीक। हियर द कोल्ड पॉलिटिक्स वॉज ऑल्सो एट इट्स पीक। कोर्ट पॉलिटिक्स भी जबरदस्त थी। अब अगर जुल्फिकार खान को मारकर फर्रुख सियर को बिठाया जा सकता है, तो बाकी कोर्टियर्स, बाकी दरबारी ये भी तो सोच सकते हैं कि फर्रुख सियर की जगह भी तो हम किसी और को बिठा दें या सैयद ब्रदर्स को मार देते हैं। और फर्रुख सियर की भी सैयद ब्रदर्स से बननी बंद हो गई। शुरू से ऐसा होता रहा। जुल्फिकार खान की जहांदार शाह से बननी बंद हो गई। दोनों के बीच में कॉन्स्पिरेसी होना शुरू हुआ, षड्यंत्र होने शुरू हुए, और जैसे ही कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र होने शुरू हुए, हालात बिगड़ते चले गए। कोर्ट पॉलिटिक्स में अलग अलग मंत्री अलग अलग ग्रुप बनाकर अलग अलग राजाओं के खिलाफ या दूसरे मंत्रियों को मारते काटने शुरू हो गए। राजा अगर ताकतवर हो ना, तो किसी की मंत्री की हिम्मत नहीं होती आवाज उठा जाए। राजा अगर कमजोर है तो मंत्री कॉन्स्पिरेसी करेंगे। मैं यहां अपनी दो गवर्नमेंट्स का कंपेयर करता हूं। कंपैरिजन किस किस का? एक तो मनमोहन सिंह वर्सेस मोदी। मनमोहन सिंह बहुत अच्छे पॉलिटिशियन नहीं थे। मनमोहन सिंह वॉज अ ब्यूरोक्रेट। वो एक ब्यूरोक्रेट थे, वो एक ऑफिसर थे। अब जो ब्यूरोक्रेट में, समझे, अब एक ब्यूरोक्रेट ने क्या किया, एक सेकेंड, अब मनमोहन सिंह क्योंकि ब्यूरोक्रेट थे, तो उन्होंने, उनके जो मंत्री थे उनके ऊपर मनमोहन सिंह का कंट्रोल नहीं था। मंत्री अपना बोलते रहते थे, मनमोहन सिंह अपना बोलते रहते थे। आप में से मैक्सिमम बच्चे रहे होंगे तो इतना अंदाजा नहीं है। हम उस टाइम पर स्टूडेंट भी रहे और उस टाइम पर अपना टीचिंग करियर शुरू किया, तो इन चीज़ों को समझ रहे थे, इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे अपने यूपीएससी पीसीएस के, तो उस चीज़ों को समझना शुरू किया। जब समझना शुरू किया और चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई अच्छे से, तो दिखाई दिया कि यार ये तो सिस्टम ही पूरा चेंज है। पूरा जो सिस्टम है वो चेंज है। एक इतना कमजोर प्राइम मिनिस्टर है, काफी कमजोर है, कि बाकी मिनिस्टर्स काबू में नहीं है। वो मनमोहन सिंह के नीचे रह के कुछ ना कुछ कांड कर रहे हैं, तभी करप्शन चार्जेस इतने ज्यादा लगे कि कुछ कहने की हद नहीं। और इस बार वाला प्राइम मिनिस्टर इतना ताकतवर है, मनमोहन सिंह की जगह नरेंद्र मोदी आए, वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं इस मामले में कि अपने किसी भी मिनिस्टर को चूं की आवाज नहीं करने, अपने किसी भी मिनिस्टर को चूं की आवाज नहीं करने देते। और 15 मिनट पहले फोन करके कहा जाता है उन्हें कि आप एक काम कीजिए, आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, आपकी जगह किसी दूसरे को मंत्री बनाया जा रहा है, और उसे वो रेजिग्नेशन देना पड़ता है। राजा ताकतवर है, लीडर ताकतवर है, तो नीचे के लोग कॉन्स्पिरेसी करना भूल जाते हैं, उनकी औकात पता लग जाती है। और अगर राजा कमजोर है तो कॉन्स्पिरेसी ज्यादा होंगी, और कॉन्स्पिरेसी ज्यादा होने का मतलब यह है, सीधा सीधा कॉन्स्पिरेसीज होने का सीधा सीधा मतलब यह है कि पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाए। अब मुगल एम्परर्स, भाई अकबर के दरबार में राजनीति होती थी, अकबर मारता था पकड़ के। जहांगीर के दरबार में राजनीति होती थी, जहांगीर मारता था पकड़ के। शाहजहां ब्रूटली एक एक को लपेटता था। औरंगजेब के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी कॉन्स्पिरेसी करे। औरंगजेब के सामने विद्रोह किए, कॉन्स्पिरेसी नहीं हो गई, दरबार शांत था। बहादुर शाह के टाइम पर पहली बार दरबार के अंदर बहस शुरू हुई। बहादुर शाह के टाइम पर पहली बार बहस शुरू हुई, पहली बार बहस शुरू हुई। और उसके बाद उसके अगला पॉइंट कहां से शुरू हुआ दरबार के बाद, जब जहांदार शाह को राजा बनाया गया जुल्फिकार खान के द्वारा, मुगल बादशाह बनाया, और फिर फर्रुख सियर को सैयद ब्रदर्स।
फर्रुखसियर के टाइम पर कोर्ट पॉलिटिक्स, दरबारी राजनीति अपने चरम पर थी और यहां से सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट फर्रुखसियर को भड़काना शुरू किया गया। फर्रुखसियर को भड़काया, फर्रुखसियर भड़क गया, नाराज हुआ, सैयद ब्रदर्स को हटाने की सोची। और जैसे ही सैयद ब्रदर्स को हटाने की सोची, सैयद ब्रदर्स को इस चीज का अंदाजा था, उन्होंने फर्रुखसियर को गद्दी से उखाड़ फेंका और उसकी जगह, क्या नाम है, दूसरे राजाओं को गद्दी पर बिठाए। अब सोचकर देखिए, उसके बाद दो और गद्दी पर बैठते हैं और वो मुगल एम्परर की हेल्प से बैठते हैं। वो मुगल रफी उद दराज एंड रफी उद दौला, रफी उद दराज एंड रफी उद दौला, ये दोनों के दोनों गद्दी पर बैठते हैं। पहले ये बैठता है 3 months 10 days, 3 month 10 days अप्रोक्सीमेट, और फिर रफी उद दौला वो गद्दी पर बैठता है 3 month 3 days, 3 महीने 3 दिन। अब 3 महीने 3 दिन रफी उद दराज बैठता है या दौला बैठता है, और दो बहुत ही कमजोर रहे और दोनों के बारे में आरोप है, both have an allegation that both died due to overdose of drugs. Both were drug addict. Maximum Mughal emperors were drug addict. अफीमची होते थे औरंगजेब को छोड़कर। हुमायूं खूब अफीम खाता था, अफीम के चक्कर में गिर के मर गया, और अकबर भी काफी अफीम ले लेता था। जहांगीर खूब दबा के अफीम पीता था, शाहजहां भी अच्छी खासी लेता था। औरंगजेब को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने सारे अफीमची और अय्याश हैं, बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे अफीमची और अय्याश में। अब आप अंदाजा लगाकर देख सकते हैं कि किस लेवल के ये लोग रहे होंगे, किस लेवल के ये लोग रहे। खैर, दोनों के दोनों मर गए। सोचकर देखिए, मुगल एम्परर अफीम पी के मर रहा है। सोचिए कितना बुरा हाल रहा होगा कि मुगल एम्परर इज डाइंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ सम ड्रग, किसी ड्रग्स की ओवरडोज लेने की वजह से मुगल एम्परर मर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि बर्बाद हो रहे हैं देश? मजे की बात ये दोनों मरने के बाद सैयद ब्रदर्स ने इन दोनों के मरने के बाद सैयद ब्रदर्स ने मोहम्मद शाह को गद्दी पर बिठाया। इसका टाइम पीरियड फर्रुखसियर का था 1713 टू 1719। ये दोनों 3-3 महीने में मर गए। ये था 1720 या 1920 टू 48। यस, एनसीईआरटी को, खासकर पुराने वाली एनसीईआरटी को जब आप पढ़ेंगे, व्हेन यू विल स्टडी द ओल्ड एनसीईआरटी, you would see that writer has written about it कि काश he was the last Mughal ruler who had time, and if he ever had tried to re-establish the influence or power of, or re-establish the glory of Mughal emperor, he could do it. इसने कहा, इसके बारे में एनसीईआरटी कहती है कि ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी थी। इसके आने के बाद लास्ट अपॉर्चुनिटी थी कि मुगल एम्पायर जो है वो सुधर जाता, और जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो जाती, क्योंकि अभी तक जो चैलेंजेस थे ना वो इतने थे नहीं। मुगल एम्पायर की जो रेप्यूटेशन थी, the reputation of Mughal Empire was very high. समझे? एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन वॉज स्टिल इफेक्टिव, आर्मी वॉज स्टिल स्ट्रॉन्ग, और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बढ़ा। एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लाइन पर था लेकिन कमजोर नहीं हुआ था। इट कैन बी कंट्रोल्ड, प्रशासन को नियंत्रित किया जा सकता था, प्रशासन को नियंत्रित किया जा सकता था। इट कुड बी कंट्रोल। अब एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हो सकता था, नो डाउट, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हो सकता था। आर्मी स्ट्रांग थी अभी भी, रेप्यूटेशन हाई थी, बट कोर्ट पॉलिटिक्स वॉज एट इट्स हाइट। कोर्ट पॉलिटिक्स यहां सबसे ज्यादा, अधिकारी जो थे हर हालत में ताकतवर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। ऑफिसर्स वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू एस्टैब्लिश देयर इन्फ्लुएंस ओवर द थ्रोन। सिस्टम के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। अब यहां से क्या सोच कर देखिए, यहां ये मोहम्मद शाह रंगीला था, ये असलियत में इनकम्पिटेंट था, ये अयोग्य था। काश ये योग्य होता तो गिरते हुए मुगल एम्पायर को संभाला जा सकता। अगर ये योग्य होता तो गिरते हुए मुगल एम्पायर को संभाला जा सकता था। बट ही वॉज नॉट कम्पिटेंट, ही वॉज द मोस्ट प्लेजर लविंग मुगल एम्पायर, मोस्ट प्लेजर लविंग मुगल एम्पायर। इसके बारे में तो क्या कहा जाए, वो सारा कम है। इसे हिजड़ों और औरतों की संगत पसंद थी, इसे हिजड़ों और औरतों की संगत पसंद थी, आदमियों की संगत में पसंद नहीं थी। कुछ ने कहा है कि ये कभी कभार मुगल एम्पायर के अंदर मुगल दरबार में बिना कपड़ों के भी आ जाता था। 3-3 महीने तक दरबार में ही नहीं आता था, हरम में पड़ा रहता था। दरबार जो चल रहा है चल लेने दो। जब राजा ही सामने नहीं होगा, जब राजा ही सामने नहीं होगा तो क्या प्रजा पर असर क्या पड़ेगा, बस इतना बताओ। प्रजा पर बहुत बुरा असर पड़ेगा जब राजा सामने नहीं है। तो यह समझ लीजिए, अगर राजा सामने है तो कहीं ना कहीं कोर्टियर्स जो हैं वो अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, वो कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा रोके, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन राजा अगर ताकतवर नहीं है, वो पड़ा हुआ है अय्याशियां करने में, नाच गाना देखने में और सब चीजों में, आई कैन गारंटी दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द सिस्टम कंप्लीटली। पूरी सिस्टम को ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। और ऐसी सिचुएशन में वो राज्य कभी नहीं बच सकता। नतीजा क्या, यहां फिर भी कॉन्स्पिरेसी हुई और यहां निजाम उल मुल्क, आगे पढ़ेंगे हैदराबाद के अंदर, निजाम उल मुल्क ही वॉज द ऑफिसर ऑफ हिम विद द, अच्छा इसे जो है ना अपनी अय्याशियों के लिए कहा जाता था रंगीला, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम था रोशन अख्तर। रोशन अख्तर वॉज हिज ओरिजिनल नेम, इसका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर और इसे रंगीला कहा जाता। सच अ इनकम्पिटेंट पर्सन ही वो, रंगीला कहा जाता था। When he was known as Rangila, when he was known as Rangila, it means something is going to be destructive for whole of this empire. कुछ ना कुछ इस पूरे साम्राज्य के लिए बर्बाद होने जा रहा था, और वही सिचुएशन यहां समझिए। अब आप यहां देखेंगे निजाम उल मुल्क आता है और इसकी हेल्प से सैयद ब्रदर्स को मार दिया जाता है। निजाम उल मुल्क, विद द हेल्प ऑफ निजाम उल मुल्क, ही किल्ड सैयद ब्रदर्स। निजाम उल मुल्क की सहायता से इसने सैयद ब्रदर्स को मार डाला।
Sayyid brothers died. Nizam ul Mulk got the throne. Oh, sorry, Nizam ul Mulk became the wazir. एनसीईआरटी लिखती है निजाम उल मुल्क बहुत अच्छा आदमी था. ही वॉज कॉम्पिटेंट ऑफिसर. वो एक योग्य अधिकारी था. हैड मोहम्मद शाह फॉलोड हिज एडवाइस. काश मोहम्मद शाह इसकी एडवाइस सुन लेता तो ज्यादा अच्छा था. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट जस्ट लाइक अ स्टोरी. मैं जो भी समझा रहा हूं उसे स्टोरी की तरह सुन लीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस. whatever was going on in India, आपको ये हेल्प करेगा, बस और कुछ भी नहीं है. नाउ व्हाट हैपेंड? मोहम्मद शाह रंगीला आगे बढ़ता, मतलब मोहम्मद शाह रंगीला ही वाज अ करप्ट पर्सनैलिटी. वो इतना करप्ट था कि अपने दरबारी से ही, अपने जो वो बाहर दरबान होता था उस दरबान से ही रिश्वत ले लेता था. ही वॉज करप्ट अप टू सच एक्सटेंट. इतना बुरा करप्ट. अभी 3 दिन के अंदर लिखना शुरू करेंगे और बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे, टेंशन मत लीजिए. अभी हमें ये लिखवाने, ठीक है. तो निजाम उल मुल्क बहुत अच्छा आदमी था. मोहम्मद शाह रंगीला बहुत करप्ट आदमी था. करप्शन तो रग रग में भरा हुआ था. अब उसे निजाम उल मुल्क से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई. सैयद ब्रदर्स को मारने के बाद उसे निजाम उल मुल्क से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई. और जैसे ही निजाम उल मुल्क से उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, निजाम उल मुल्क से जैसे ही उसे प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई, उसने क्या किया? निजाम उल मुल्क ने कोशिश करी सिचुएशंस टू फिक्स एवरीथिंग, कि यार सब चीजें फिक्स हो जाए. मुगल एम्पायर है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. बट ही वॉज नॉट एबल टू डू. वो कुछ कर नहीं पाया. वो कुछ कर नहीं पाया. नतीजा उसका क्या निकला? नतीजा उसका ये निकला, निजाम उल मुल्क left Delhi forever, left Delhi and went to हैदराबाद. ये हैदराबाद का गवर्नर था और निजाम उल मुल्क वहां पहुंच गया. कहां? निजाम उल मुल्क हैदराबाद पहुंच गया और वहीं जाकर रहने लगा कि वहीं का साम्राज्य संभालूंगा. आई डू नॉट हैव एनी बिजनेस विद दिल्ली, कि मेरा दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है. आई डू नॉट हैव एनी बिजनेस विद दिल्ली, मेरा दिल्ली के साथ कोई लेना देना नहीं है. एंड आई वुड टेक केयर ऑफ हैदराबाद, कि मैं अब हैदराबाद को देखूंगा, मुझे दिल्ली से कोई मतलब नहीं है. एनसीईआरटी लिखती है कि निजाम उल मुल्क का दिल्ली छोड़कर जाना दिल्ली की बदकिस्मती थी. इट वॉज द डिसास्ट्रस, मतलब ये बहुत बुरा एक फेट था, इच्छा थी, वो बहुत बुरा एक फेट था दिल्ली का, कि निजाम उल मुल्क जैसा, बदकिस्मती थी कि निजाम उल मुल्क जैसा व्यक्ति दिल्ली छोड़ गया और उसके बाद दिल्ली को कोई नहीं बचा सकता था. और यही रीजन था, इन सारी वजहों से जब हर अच्छा आदमी परेशान हो जाए तो मोहम्मद शाह रंगीला, इसे रंगीला कहते थे लोग, मोहम्मद शाह रंगीला की वजह के अंदर मैक्सिमम डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर टुक प्लेस. मैक्सिमम डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर टुक प्लेस. मुगल एम्पायर टुक प्लेस. मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विघटन हुआ. मैक्सिमम डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर टुक प्लेस. मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विघटन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ. 1722 अवध was declared as autonomous state by Sadat Khan. 1724 Hyderabad was separated by Nizam ul Mulk. Many a times you would find his original name Chinch Kilich Khan. Understand? 1724, after that Hyderabad Nizam
many of the states like Jats, Rohilkhand, Bundelkhand, एंड ये सारे स्टेट्स, और उसके बाद क्या नाम है, हाँ, ये सारे स्टेट्स भी डिसइंटीग्रेट होते चले गए. ऑल दीज स्टेट्स वर फॉर्म्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर. मैक्सिमम ऑफ देम डिक्लेयर्ड देयर ऑटोनॉमी, अपनी स्वायत्ता घोषित कर दी कि अब हम स्वायत्त हैं. मैक्सिमम ऑफ देम डिक्लेयर्ड देयर sovereignty, autonomy, स्वायत्त हैं. It means we are ruling on the name of Mughals, but actually we are the real owners. Mughals are just for name's sake. कि जो भी है वो मुगल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए हैं, अदरवाइज सारा सिस्टम सब कुछ हम ही चेक कर रहे हैं, हम ही देख रहे हैं, हम ही रन कर रहे हैं, हम ही रन कर रहे हैं. समझे? अब ऐसी सिचुएशन में maximum disintegration of Mughal empire took place. Now next, when maximum disintegration took place, rise of Marathas was taking place. He got the throne in the year 1719. This is India, was तो कह नहीं सकते. Here was or here is Delhi, and Muhammad Shah Rangila used to live here, and here was Pune. In this Pune, Maratha officer Peshwa Baji Rao first was there. Peshwa Baji Rao first was there. Peshwa Baji Rao first. He was of the opinion that Mughal empire is tottering to death. Mughal empire is like a withering tree. He used to call Mughal empire as withering tree. He used to say that let us hit on the trunk of this withering tree, the branches would fall automatically. He used to say that let us hit on the trunk of this tottering tree, the branches would definitely fall automatically. Branches would definitely fall automatically. When such a situation was there, what happened? By Sahuji, the grandson of Shivaji, and was once he was a prisoner of Mughals, he was of different opinion. He used to say that we should not focus in Delhi, we should expand our empire to the south, to the east, let us assume to the west, but we are not going to focus, we are not going to go to Delhi or capture Delhi, because Delhi's politics is something different and we would definitely get trapped when we would capture Delhi. वो कहते थे कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में हमें नहीं जाना. इसके ऊपर एक डिफरेंट ओपिनियन है, बात की है. अच्छा, दिस बाजीराव पेशवा वाज ऑफ द एज ऑफ 19 years when he got the throne, and he was of the age of 20 years when he got the throne, when he was appointed. He was appointed in 1720 to 39. It means दोनों सेम एज के थे, but he was the best warrior of his time
ये अपने टाइम का सबसे बढ़िया वॉरियर था जिसने 41 बैटल्स लड़ी और एक भी नहीं हारा। 41 बैटल्स, 41 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारा। और दूसरी तरफ मोस्ट प्लेजर लविंग पर्सन ऑफ हिज टाइम, अपने समय का सबसे ज्यादा अय्याश बंदा। मोस्ट प्लेजर लविंग पर्सन ऑफ हिज टाइम, अपने समय का सबसे अय्याश बंदा यही था। बोथ वर देयर, both were present. One was in Delhi, other was in Pune. Peshwa asked Sahuji that let me go to Delhi. I would capture Delhi. साहू जी से कहा था कि मुझे दिल्ली पे हमला कर लेने दो। साहू जी कहते नहीं करना, I will not allow you to go to Delhi. But Bajirao was Bajirao. He decided to go to Delhi, but not with his army, with just 500 of his soldiers. अपने सिर्फ 500 सोल्जर्स के साथ वो दिल्ली की तरफ निकल पड़ा, with an excuse that he is going there just for going to some, क्या कहते हैं, शिकार खेलने जा रहा है, some hunting, शिकार खेलने जा रहा है, आ जाऊंगा 10-12 दिन में, लेट मी टेक सम रेस्ट, कि मुझे कुछ रेस्ट लेने दो, मैं शिकार खेलने जा रहा हूं, आ जाऊं। अपने 500 सोल्जर्स के साथ ही जस्ट मार्च्ड टुवर्ड्स दिल्ली। ग्वालियर तक पहुंचा, तब तक तो मोहम्मद शाह रंगीला को पता लगा कि बहादुर शाह मतलब बाजीराव इज मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली। इसकी ग्लोरी तो सभी को पता थी कि भाई 41 वॉर्स लड़ चुका है, उस टाइम तक 38-39 हो चुकी होंगी, वॉर्स लड़ चुका है और सबको धो चुका है, वॉर्स लड़ चुका है, सबको धो चुका है और हर कोई इससे डरता भी था। इन दैट सिचुएशन यू कैन इमेजिन कि सिचुएशंस काफी ज्यादा चैलेंजिंग थी और दिल्ली के लिए, और पॉसिबिलिटी, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट दे कुड चैलेंज मराठा, सॉरी दिल्ली कुड क्रश मराठास और दिल्ली कुड हैड अ मेस विद मराठास। लेकिन मराठास अब बहुत पावरफुल हो चुके थे, पूरे सेंट्रल इंडिया के ऊपर उनका काफी डोमिनेंस था, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था और बिहार बंगाल तक था। मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली में बैठा हुआ था। बाजीराव रीच्ड ग्वालियर with just 500 of his soldiers. मोहम्मद शाह got frightened कि why he is coming to Delhi, वो दिल्ली क्यों आ रहा है। जब उसे पता लगा तो उसने अपनी दरबार बुलाया और दरबार बुला के ये कहा कि क्या किसी ने बाजीराव को देखा है। दिस इज अ वेरी फेमस इंसिडेंट, कि क्या किसी ने बाजीराव को देखा है। वन पेंटर सेड दैट यस सर, आई हैव सीन हिम, कि मैंने देखा है, मैंने उस, और रंगीला कहता है ठीक है फिर तो आप उसकी पेंटिंग बना सकते हैं, यू कैन ड्रॉ अ पेंटिंग ऑफ हिम, उसकी एक पेंटिंग बना दो। पेंटिंग वॉज फ्रेम्ड, पेंटिंग बनाई गई पेंटर ने। पेंटिंग वॉज लाइक ही वॉज ऑन द बैक ऑफ हॉर्स, वो घोड़े की पीठ पर था, लगाम वट एवर द विग वॉज देयर दैट वॉज फ्री, जो भी उसकी लगाम थी घोड़े की वो फ्री थी, एंड ही वॉज ईटिंग समथिंग, गेहूं की बालियां जो होती हैं उसे खा रहा, और तलवार बिल्कुल बिना किसी कवर के उसकी घुटनों पे रखी हुई थी, घोड़ा चल रहा है। ही वॉज सच अ लेवल ऑफ वॉरियर, ही वॉज सच अ लेवल ऑफ वॉरियर, इस लेवल का वॉरियर था, इस लेवल का वॉरियर था, अल्टीमेट। मोहम्मद शाह रंगीला ने इसकी फोटो देखी तो डर गया, और इस हद तक डर गया, कहता यार ये कौन है जो इतना खतरनाक तरीके से रौब के अंदर जो जा रहा है, इसके घोड़े के अंदर फोटो में ये इतना रौबीला दिख रहा है, जब ये मेरे सामने आएगा तो क्या होगा। एक काम करो, दिल्ली के दरवाजे बंद करो, जो ये चाहता है इसे दे दो और नमस्ते करके जाने दो, जो ये चाहता है इसे दे दो और इसे जाने दो।
खतरनाक सिचुएशन थी, खतरनाक सिचुएशन थी कि मुगल एम्परर वाज सेइंग सो सम इन्वेडर हैड कम टू दिल्ली with just 500 soldiers and Mughal emperor was not even had a courage to stand with sword. एक तलवार के साथ नहीं खड़ा हो सकता वो, and he was surrendering, a type of surrender ना, वो he was surrendering in front of that invader. उस invader के सामने वो surrender कर रहा है. This was the situation. Such level of situation was there. Bajirao raided Delhi. This was the first time that Marathas raided Delhi. And in the beginning of this class, I had told you that Mughals were surrendering. Bahadur Shah has surrendered in front of Marathas. He is allowing the Marathas to collect taxes from the Deccan region. Later, Mughal emperors followed the same policy, same suit, and they also bowed in front of Marathas. उन्होंने भी मराठास के सामने झुकना शुरू कर दिया. नतीजा क्या हुआ? पावर ऑफ मराठा grew up to high level. बहुत तेजी से बढ़ने लगी. Therefore, in present time also, government never used to allow these rebel groups, mainly the Naxalites and the separatist groups in Kashmir, to raise some fund from somewhere. वो कहीं से कोई फंड नहीं रेज करने देते, उनकी कमर तोड़े रखती है. और ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये तो वैसे भी खतरनाक है. नेक्सलाइट्स की कमर तोड़ रखी है उनके फंड्स रेज करने की ताकत से, उनको फंड रेज नहीं करने देती. सेपरेटिस्टों को तो बिल्कुल ही मार पकड़ रखा है, और जितने भी ये ऑफिसर्स हैं उनको तो उठा के बाहर फेंक रखा है. In that situation, what was there? निजाम, ये जो बाजीराव है ये आगे बढ़ता है, पावर कैप्चर करता है, मतलब आगे बढ़ता है. जो भी रैंसम वगैरह दिल्ली के आसपास के ऑफिसर से लेना होता है लेता है, और चुपचाप वापस चला जाता है. दिल्ली वॉज सेफ. बट वॉज इट द रियलिटी दैट दिल्ली वॉज सेफ? Delhi was safe in reality? Really? No. क्या दिल्ली सेफ थी? क्या सच में दिल्ली सेफ थी? तो आंसर है नहीं. दिल्ली was not safe because whatever the reputation of Mughal Empire was there, in the rule of 20 years approximate, economic crisis became grave. बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका था. यहां मुगलों के मराठा अटैक के बाद आर्मी ऑफ मुगल डिफीट, जो वीकनेस ऑफ मुगल आर्मी वाज एक्सपोज्ड. वीकनेस वाज एक्सपोज्ड. बात समझ में आ रही है? एडमिनिस्ट्रेशन वाज व्हाटएवर वाज डिक्लाइनिंग स्टार्टेड गेट collapsed एंड रेपुटेशन वाज ओवर. रेपुटेशन खत्म हो गई. रेपुटेशन इस तरीके से खत्म हो गई कि एक इन्वेडर आता है, दिल्ली के आसपास घूमता है, और आकर घूमकर सब कुछ को बर्बाद करके चला जाता है, और आप कुछ नहीं कर पाते. और आप कुछ नहीं कर पाते. इट मीन्स मुगल एम्पायर वॉज नॉट पावरफुल एट दैट टाइम. यहां से मुगल एम्पायर बर्बाद होता है. वट एवर द रेप्यूटेशन, देखो रेप्यूटेशन बड़ी मैटर करती है. इफ समवन डू नॉट हैव एनीथिंग नो मैटर, बट ही डू नॉट हैव रेप्यूटेशन, वो सब बर्बाद कर देगा. रेप्यूटेशन इज मस्ट फॉर एवरीवन, एटलीस्ट फॉर एवरीवन. सबके लिए रेप्यूटेशन बहुत जरूरी है. यहां समझिए, और यहां पर यही एक इंपॉर्टेंट मैटर, यहां पर यही एक इंपॉर्टेंट इश्यू था, इंपॉर्टेंट मैटर. देखते हैं इसके बारे में. लेकिन यहां से मुगल एम्पायर का बिल्कुल बर्बादी शुरू हो गई. फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां इस पॉइंट से डिस्ट्रक्शन ऑफ मुगल एम्पायर हैड स्टार्टेड टेकिंग प्लेस.
यहां से मुगल एम्पायर का जो डिस्ट्रक्शन था वो शुरू हो चुका था। एंड वेयर इट वुड एंड आई कांट, ये खत्म कहां होगा मैं नहीं कह सकता। आई वुड टेल, आई कैन टेल, दे नोबडी न्यू एट दैट टाइम। टुमारो आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स, that was the incident which was proved as the, which wiped out all the reputation and which created the spillover effect all over India, जिसकी वजह से सब बर्बाद होना शुरू हो गया और सिचुएशंस जो थी वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। टुमारो, कल ये मुगल खत्म और उसके बाद जितने भी छोटे छोटे रूलर्स थे उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, और 19th में बी पॉसिबली डे आफ्टर टुमारो और 2 or 3 days after 2 or 3 days we are going to start with our syllabus and we will properly make notes and all these things. Okay, thank you.